हेलो बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ MCQs फ्रॉम ट्रांसपोर्ट चैप्टर। ओके, ट्रांसपोर्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने निकाले हैं जो एक बार आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से जस्ट पहले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। नंबर 1, द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज expressways, border roads, national highways, state highways. The correct answer is national highways. Okay. Number 2, these are the highways planned for high speed traffic and having few intersections. इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों एक्सप्रेसवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे विच कनेक्ट्स गाजीपुर टू लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। इसका नाम क्या है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। द आंसर इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया एट प्रेजेंट इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is golden quadrilateral is the largest highway project in India which connects Bengaluru, Pune, Ahmedabad, Surat. Next option is Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi, Ahmedabad, Kolkata, Chennai. इसका आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन चार मेट्रोपॉलिटन्स को कनेक्ट करते हुए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको नाम दिया गया है। एंड बेसिकली ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑलमोस्ट एक क्वाड्रिलेटरल लाइक शेप इसका बनता है 4 कॉर्नर्स से, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन द नेम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एंड its role is very very important in the economic development of India in last 1 decade. Okay, next question is, this expressway connects Srinagar to Kanyakumari, Srinagar in the north to Kanyakumari in the south. Okay, अब इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्चुअली दिस इज चिल्ड्रन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉट ईस्ट वेस्ट इवन, यू नो। इसका नाम है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में एक्सट्रीम सदर्न टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड दैट इज कन्याकुमारी, इन दो को कनेक्ट करते हुए एक कॉरिडोर बनाया गया है, अगेन द एक्सप्रेस वे ओनली, एंड दैट हैज बीन कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसी तरह से इसी का एक पार्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में दो जो सेंटर्स हैं हमारे, वो हैं पोरबंदर इन द वेस्ट, ओके, इन गुजरात, एंड सिलचर इन द ईस्ट। ठीक है, तो इन टोटल इसको हम एक कंबाइंड एक नाम जब देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो वो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is India's first 6-lane concrete high-speed tolled expressway. इसका आंसर होगा बच्चों 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 8-lane एक्सप्रेसवे विच कनेक्ट्स दिल्ली टू नोएडा। अब इसका आंसर क्या होगा? नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे। इसका आंसर होगा बच्चों दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके अंडर में ऑप्शंस आपके हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, राइट, नेक्स्ट है स्टेट हाईवेज, देन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। करेक्ट आंसर इसमें होगा बच्चों स्टेट हाईवेज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज। ओके, और इसके ऑप्शंस हैं तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। इनमें आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, this was established in 1985 with the object of providing helicopter services in inaccessible areas. Okay, अब इसका
करेक्ट आंसर क्या होगा? हेलीकॉप्टर सर्विसेज. जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, सो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI. Next is Pawan Hans Helicopters Limited, that is PHHL. Then Border Road Organization, that is BRO. And Air India, that is AI. अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. ओके, या PHHL इसको बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज द फास्टेस्ट एंड कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ ऑल द मीन्स, whether it is road, rail या waterways, सब में बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है इस मामले में. जैसे आप बात करोगे, इट्स द फास्टेस्ट, इट्स मोस्ट कंफर्टेबल, राइट, and it saves a lot of time also. Air transport is the answer of it, right, of this question. Clear? This transport depends on weather conditions. Now, which transport depends on weather conditions the most? One is the airways, the other is the waterways. Okay, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? First option is road transport, next is rail transport, third is air and water transport both, and D is air transport. According to the question, C is the correct answer, because air transport and water transport, they get equally affected by the weather conditions and all that, right? तो इसमें आपको याद रखना air and water दोनों का, that is option C will be correct, right? Now next question, this transport is costly than other modes of transport. We all know it very well. Air transport is the most expensive, or you can say it's the most costly means of transport, and that's why many people, the middle class families, especially in India, are not able to afford it, right? Then next, this mode of transport needs long traveling hours. अब इसमें बच्चों एक चीज याद रखना है, रोड, रेल, वाटर, एयर. वाटर ट्रांसपोर्ट इज द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम. ओके, और इस वजह से इसको बोला जाता है कि जो लोग इससे ट्रैवल करते हैं या जो लोग वर्क करते हैं, राइट, उनको अक्सर सी सिकनेस वाली प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, राइट. So long traveling hours, that is a big drawback of water transport, right? Next question है बच्चों, this mode of transport is environment friendly. Environment friendly में again road, rail, air ये कोई नहीं आएंगे, जबकि out of all the four, water transport is more environment friendly. Okay, consumption of fuel in this case is very less. Okay, so that is why water transport is considered as the best one. Next question. This is natural harbor which handles the export of tea, coffee, spices and imports of petroleum oil, right? अब इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? कोची in Kerala, Mumbai in Maharashtra, Marmagaon in Goa और इन्नौर पोर्ट. इनमें से करेक्ट आंसर होगा बच्चों कोची. ठीक है, कोची केरला में, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कनेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. ओके, अब इसमें ऑप्शंस क्या है? नेशनल वाटरवेज नंबर 4, नेशनल वाटरवेज नंबर 5, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 3. अब इनमें से बेस्ट जो आंसर होगा दैट विल बी taken. So national waterways number 4 is the you can say most appropriate answer for this. Okay, so children, this is all with this video of transport unit, right? And I hope कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ लोगे एग्जाम देने जाने से पहले, तो एक क्विक रिवीजन हो जाता है पूरे यूनिट का. ओके, सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट and do share the link of this video with the other friends of yours. Okay, acha, so we are going to meet in the next video. Till then, bye.